start biology. Biology. Now, first chapter. ठीक है. Now, what is the means of biology? स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. Bio means life and logy means study. That means study of life, known as biology. Clear? In case of 11, that is unit first. Name is diversity in living world. आपकी 11th क्लास में फर्स्ट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. And diversity in living world units first include 4 chapters. Unit first include 4 chapters. First is the living world. The living world, जीवित संसार. Second is biological classification. And third is plant kingdom. Now, kingdom plantae. And the fourth, animal kingdom. Now, kingdom animalia. Okay. Clear ji? So first, second, third, and fourth. All are included in diversity in living world. First unit. The living world biological classification as well as plant kingdom all belongs to plant diversity. Plant diversity and kingdom animalia belongs to animal diversity. We firstly study plant diversity. So plant diversity, the first is in the living world. Chapter number 1, that is the living world. Outline. सबसे पहले हम ये देखें क्या क्या इसके अंदर पढ़ेंगे. Outline of the living world. Now first is question. What is living? सबसे पहले जो हम पढ़े what is living? Organism or object or cell. Living क्या है? And when we discuss what is living, then we classify. फिर हम उसे क्या कर देंगे साहब? क्लासिफाई. एंड क्लासिफाई करने के लिए क्लासिफाइड हम करेंगे डाइवर्सिटी. और डाइवर्सिटी को क्लासिफाइड करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी. फर्स्ट इज टैक्सोनॉमी एंड सेकेंड इज सिस्टमैटिक. What is the means of taxonomy? Taxonomy contains 2 words. First is taxo. Taxo comes from taxes. And nomos means nomos. Now, what is the means of taxes? Taxes means arrangement. And nomos means laws. That means arrangement of organism with laws, known as taxonomy. Taxonomy is a Latin word. Now, what is the means of systematics? Means of systematics: regular arrangement of organism. Clear? Now, classified diversity taxonomy and taxonomy include 3 points. First is identification. जब हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेंगे, देन सेकंड स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन. तो जब हम उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे तो सेकंड स्टेप इज नोमेनक्लेचर. हम उसका क्या नाम देते हैं? नोमेनक्लेचर. आफ्टर नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन. क्लियर?
In case of nomenclature, we state two types of nomenclature. First is binomial nomenclature. And second is trinomial nomenclature. And then we study taxonomical categories. Taxonomical categories. And then we study taxonomical tools. और एड्स क्लियर जी। पर जो एनसीईआरटी का सिलेबस इसमें से रिड्यूस किया गया, ये वाला पोर्शन हटा दिया, तो ये वाला पोर्शन हम नहीं पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? दैट इज द आउटलाइन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। First identification, then nomenclature, then we study taxonomical category, and then classification. Clear? Now first is what is living. First heading is what is living. That's all outline. The living word, and the first question is the living word is what is living. What is living? What is living? Now, characters of living. अगर मुझे लिविंग को डिफाइन करना है तो उसकी कैरेक्टर्स बताना। कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, like growth, respiration, reproduction, excretion, digestion, locomotion, etc. Clear? All are living features, all are living characters. But in case of reality, in case of what is living, क्या ये सच में लिविंग के फीचर है? Then answer is no. Because लिविंग कौन है? द कैरेक्टर, लिविंग का कैरेक्टर क्या? कैरेक्टर ऑफ लिविंग क्या? द कैरेक्टर which has no exception. Consider as a defining property of living. यानी ऐसा लक्षण, ऐसा कैरेक्टर जिसका कोई अपवाद या एक्सेप्शन ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? लिविंग का कैरेक्टर। And growth, respiration, reproduction, excretion, digestion, all are not considered in living character because exception are always there. क्योंकि हमेशा आपको क्या मिल जाएंगे? सब एक्सेप्शन मिल जाएंगे। Now, what is living? What is character? In case of special 4, यानी स्पेशल 4 आपको लिविंग के कैरेक्टर पूछे। Then first is growth, second is reproduction, and third is metabolism, and fourth is consciousness. Only metabolism and consciousness are included in exclusive feature of living, exclusive character of living. Any special character 4 and exclusive character of living, that is 2, metabolism and consciousness. If these two process or any one process occurring in a body, then that's type of body known as living. अगर ऐसी कोई भी इन दोनों में से कोई भी मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस कोई भी होता है, that's called a living exclusive character, because metabolism and consciousness have no exception, because metabolism and consciousness has no exception. Clear?
इसलिए ये क्या है, लिविंग के कैरेक्टर है, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है, बिकॉज द कैरेक्टर विच हैज नो एक्सेप्शन कंसाइडर एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। और ये सारे के सारे एक्सेप्शन कंटेन करते हैं, इसीलिए ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लिविंग नहीं है, नॉट एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लिविंग। बिकॉज कैरेक्टर विच हैज नो एक्सेप्शन कंसाइडर एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ऐसा ही लक्षण हम लेंगे जिसका कोई अपवाद ना हो, उसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग यूज करते हैं। क्लियर? इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, फुल्ली डिस्क्रिप्शन।